So hi guys, मेरा नाम असद कोठारी है and welcome to this channel, welcome to this video. आज की हम इस वीडियो में मई जून 2025 वेरिएंट नंबर 22 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं. If you're going for paper 2 in AS level तो मैं definitely case study exam आएगा. You can see on your screen right now. ये मई जून 2025 का पेपर है. Okay, this is how your paper 2 will look like. एंड ये हमारे सामने केस आ गया है जो क्वेश्चन नंबर 1 है. टाउन ट्रक्स टीटी के नाम से बिजनेस है. नाउ दिस इज द केस दैट अपीयर्ड इन मई जून 2025 and the purpose of this video, if you're watching it and if you watch it till the end, the purpose is I'm going to read the case. I'm going to tell you as a student that how you are going to read the case basically. And when you go for an exam और तुम्हारे सामने let's say टाउन ट्रक्स का क्वेश्चन आ गया, so how to actually read it. Okay, this video is going to help you with that. Maybe you should have your notebook and you can make your notes while watching this video, so that will be more effective. Okay, so let's see what this business actually do. Town trucks. So TT is a private limited company in country J. TT has contracts to deliver products to secondary, tertiary and quaternary sector businesses. Okay. So QZ is one of the largest manufacturers in country J and plans to outsource its supply chain management. A contract has been agreed between TT and QZ based on the following cost and revenue data. See table 1.1. So we have been also given the table in this case study. It's table 1.1 and we have been given the cost and revenue forecast for the QZ contract. So now see when I start to read the case as a student, मुझे इस बिजनेस को समझना है कि ये टाउन ट्रक्स जो हमारा बिजनेस है वो करता क्या है. वी बेसिकली डिलीवर प्रोडक्ट्स टू सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर बिजनेसेस, राइट. यूँ समझ लो कि हमारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ होंगी कोई, और हम जैसे बिस्किट्स बनाते हैं कोई, तो बिस्किट्स को हमें शायद किसी सुपरमार्केट तक पहुंचाना है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस. ओके, सो वी डिलीवर प्रोडक्ट्स टू सेकेंडरी, टर्जरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर. एंड QZ जो है वो हमारे मुल्क में कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है, एंड QZ इज एक्चुअली प्लानिंग टू आउटसोर्स. एंड TT क्योंकि प्रॉबेबली डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स, तो QZ को अपना कोई चीज़ डिलीवर करवानी होगी, तो वो टाउन ट्रक्स के पास आया है कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं फला फला, आप हमारे ये डिलीवरी कर दो. सही, वी आर बेसिकली टारगेटिंग बिजनेस कस्टमर्स. We are not targeting end users in this case, if you see. So now when you read the case as a student, you'll have to understand that, okay, we deliver products. And maybe you start to think of the vans or the distribution vehicles that we often see on the roads, maybe जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही होती हैं. So उसके बारे में ज़रा विजुलाइज करोगे और सोचोगे तो और बेहतर इसके बारे में तुम अटेम्प्ट भी कर सकोगे ना. So, okay, so let's see what table 1.1 is. So, cost and revenue forecast for the QZ contract. We have been given direct costs average per delivery, okay, $5. यानी कि एक डिलीवरी करने पे हमारी कॉस्ट $5 की आती है. Total indirect costs are $9,000 and the total revenue that is expected from this contract is $40,000. So, okay, that's kind of good contract. और ऊपर लिखा हुआ है TT's sales manager has forecast that TT will make 5,000 deliveries with the new contract. So this is a big contract. Okay, that's kind of cool. TT को ये contract मिलने वाला है. फिर okay, TT की कुछ details हैं in the second last paragraph here. So TT employs 120 drivers. The majority of these drivers are white men aged between 40 and 60. Damn, that's like too specific. मतलब white men aged between 40 and 60. A national newspaper has recently criticized the truck industry in country J for not having diversity and equality in the workplace. Clearly, they are white men. Why? Like, they're not. मतलब अगर फेयर हो गए आप रिक्रूटमेंट में, तो प्रॉब्ली आप हर तरह की जेंडर और एथनिसिटी और उसको आप फिर वैल्यू भी नहीं करोगे. यू जस्ट मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है. Clearly, they are being criticized for diversity, and that's HR. If you have studied the course. That is the responsibility of HR department of TT to actually make sure that the workforce is diverse and is focused on equality. Okay. So Clyde, the marketing manager, has been set an objective to increase TT's revenue. He has decided to target small online retailers. Okay. So छोटे retailers को target करना चाह रहे हैं, probably a new market segment that they are trying to sell or deliver their products for.
So TT will pick up individual products from the small online retailers and deliver them to households. This would require a new fleet of smaller trucks, but has the potential to increase TT's revenue. Clyde plans to use digital promotion to target these small online retailers. Okay, so Clyde हमारी कोई marketing manager है. वो एक बिल्कुल नई तरह की audience के लिए services को offer करना चाह रही है, and she's saying that she's going to use digital promotion. This is again unit number 3, and वो फिर हमने course में भी पढ़ा है. If you have studied the course from me, then we have also talked about this topic kind of detailed. So अच्छा, this case is kind of very interesting for me. I think so. एज अ स्टूडेंट अगर तुम ये एग्जाम दे रहे होते पिछले साल मई जून 2025 में, तो केस इज काइंड ऑफ गुड. नाउ केस की रीडिंग के बाद एज अ स्टूडेंट जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ कि तुम एग्जाम देने बैठे हो, इन्विजिलेशन चल रही है, ब्राउन टेबल्स हैं. ओके, सो नाउ यू आर इन द एग्जाम, यू जस्ट सॉ दिस केस, यू रेड इट. ओके, नाउ यू नो व्हाट टाउन ट्रक्स डू. ओके, डिलीवरी सर्विसेज देते हैं. क्यूजी कोई मैन्युफैक्चरर है जो आउटसोर्स करना चाह रहा है और वो एक नया डिलीवरी आई थिंक सो बिजनेस ढूंढ रहा है, तो उसने टाउन ट्रक को आउटसोर्सिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट 5000 डिलीवरीज का दिया है. और टीटी के पास जो है 120 ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, और क्लियरली बहुत डिस्क्रिमिनेटेड साउंड कर रहा था इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस. एंड नाउ इसके ऊपर फिर न्यूज़पेपर पे बात आ चुकी है, सॉर्ट ऑफ अ प्रेशर ग्रुप अटेंशन है हमारे ऊपर. और फिर ये जो हमारी मार्केटिंग मैनेजर है क्लाइड, now she is actually trying to increase the revenue, and she is actually trying to target new audience, which are the small retail stores, and for that they will be needing a new fleet of small trucks basically. Okay, so now you know what the business is. So when I dive into the requirements now, there are 4 requirements in paper 2. Okay, and you can see this A, B, C, and D. I'll just go through the requirement, and in this video, basically as part of this video, हमने केस रीड करना सीखा, और अब हम ये सीख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे रीड करते हैं, क्या मतलब है इन रिक्वायरमेंट्स का. ओके, सो व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट अ पेपर एट योर एंड, और मे बी जब हमारा लाइफ पास पेपर सेशन भी स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, तो उसमें हम ये एक्चुअल में सॉल्व भी करेंगे. वी एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व इट, बट फॉर दिस वीडियो ओनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज रिक्वायरमेंट्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर. सो ए पार्ट 1 जो 1 मार्कर है, वो कह रहा है आइडेंटिफाई वन बिजनेस एक्टिविटी within the quaternary sector. So you just have to identify one. You can just write one sentence, like one of the businesses in quaternary sector is let's say business dealing in information, such as OpenAI. ठीक है, so एक brand name ना लिखो, general लिखो, ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, A part 2, explain the term supply chain management. This is a 3 marker. I have to talk about supply chain management, the process of getting the raw material till the time it reaches the final end user. तो वो जो logistics होती हैं जो unit 4 में पढ़ाते हैं, 2 to 3 good quality statements about supply chain management, the concept of it. फिर B part 1 में क्या है, and refer to table 1.1. Okay, we have to refer back to the table in the case. So refer to table 1.1 and other information. Calculate TT's forecast total profit from the QZ contract. Okay, so we have to do the calculation of profit here. जो 5000 डिलीवरीज का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसमें हमें आई थिंक रेवेन्यू लिखना है, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. वर्किंग्स प्रॉपर शो करते हैं. मेक श्योर यू शो प्रॉपर वर्किंग्स व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन. एंड एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई टीटी नीड्स एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. Why do we need cost information to set the price, to set targets and budgets, and right? So why do you need cost information? This is a proper 1 paragraph, short 1 paragraph for 3 marks. Okay, C part is analyze 2 advantages to TT of improving diversity and equality in the workplace. That's a good question. So introduction paragraph होगा, 2 main paragraphs होंगे, और diversity और equality पे काम करने से motivation, reputation, मतलब you can talk about 2 points, any 2 points, and then you have to explain it in context of the case obviously. And part D कह रहा है evaluate the usefulness of digital promotion to TT. My God, this is a crazy and interesting case, I say. Evaluate the usefulness of digital promotion to TT when targeting small online retailers. Digital promotion, जैसे social media marketing, such as search engine optimization, जो unit 3 में है marketing mix के अंदर. So now 12 marker है, so I think introduction, 2 main paragraphs, and then a good conclusion paragraph where you suggest that how useful this digital promotion would be for this TT in context again. Okay,
So this is how your one case looks like, and I hope that this video is actually going to help you understand how to read the case when you are in an exam. और खुद से घर पे एक दफ़ा इसको practice करना read करने की after this video. So this is actually going to help you better. And stay tuned to our channel, and I hope you're liking the content we're creating, and we are going to come up with more and more of such helpful content for you guys. And have a good day. Bye bye. See you.